स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए और ताकि मतलब इंडिया में स्पोर्ट्स एक नंबर पे आने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो कोई बहुत लोग हैं अच्छा अभी तक अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है उसके बावजूद भी नौकरी भी नहीं है और उसका गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं मिलता है। मगर मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को भी जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी गवर्नमेंट ध्यान दे के उन लोगों को सपोर्ट करे और जितना गवर्नमेंट है उन लोगों को कहना चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स खेल के रिटायर हो गया उन लोग को भी मतलब और दूसरा मौका दे के बाकी लोग को यंगस्टर लोग को सिखाए और उससे आगे जितना पहुंचा सके वो पहुंचाए। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब भी मैं जीतता हूँ तो सभी लोग शाबाशी देते हैं, शाबाश बहुत अच्छा कर रहा है। और कभी कभी मैं हार जाता हूँ तो कोई मेरे से भी बात करना बंद हो जाता है। कोई बात नहीं, अगली बार मिलेगा। अगर मैं आज हार गया कल तू जीतेगा, तो मैं यही सोच के अगर मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा आने वाला काल बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये मैं अपने आप को ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं आज हार गया कल तू जीतेगा, तो सचमुच का कल आज मैं हार गया तो कल जीत जाता है। अगर कल मैं हार गया तो परसों तू जीतना है। तो मैं अपने आप को भरोसा है कि मैं एक दिन ना एक दिन ज़रूर जीतेगा और सही मौके पे भगवान मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं यही सोचता हूँ कि सही मौका आने का इंतज़ार करता हूँ। मैं स्पोर्ट्स के अलावा मैं खाने पीना बहुत पसंद करता हूँ, खाना बनाते हैं और शॉपिंग करता हूँ और जब भी मौका मिलता है टीवी देखता है, म्यूज़िक सुनता है। तो बाकी टाइम में मतलब जो आर्चरी के काम में मतलब अपना काम करता है, बाकी टाइम में मैं अपना खुश रहता हूँ, सभी को खुश रखता हूँ, माँ पापा को, भाई बहनों को, सभी को खुश रखता हूँ। मगर सबसे पहले अपने आप को खुश रखता हूँ कि मैं जितना भी खाना पसंद करता है और शॉपिंग करना बहुत पसंद करता है। ये दो चीज़ बहुत पसंद है। सबसे पहले अगर ऊपर वाला ने मेरा साथ नहीं देता और उन्होंने मतलब हमेशा मेरे को आशीर्वाद दे के मेरे को जो कुछ भी करे वो हमेशा मेरा साथ था, इसलिए मैं आज जहाँ तक है वहाँ तक उनके लिए यहाँ तक पहुँचा। मगर और एक दूसरा बात है कि मेरा माँ पापा, मेरा पेरेंट्स मेरे को पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता तो अगर मैं जहाँ तक है वहाँ नहीं पहुँच पाता। उन दोनों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद और मेरा दीदी का सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा। अगर मैं भी कुछ मेहनत नहीं किया होता तो मैं भी नहीं पहुँच पाता। अगर जितना भी उन लोग मेरे को पुश करे तुम अच्छा करो, मगर अगर मैं खुद से नहीं किया होता तो कुछ नहीं मिलता। मगर मैं भी बहुत ही मेहनत किया है। बाहर निकलते हैं तो सभी लोग हाँ वो देखो ओलंपियन चक्रवर्ती देखो, ऐसे करके मेरे से मिलने आता है। तो मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है कि हाँ मैं भी मतलब लोग मुझे धीरे धीरे पहचानने लगे मेरा स्पोर्ट्स को लेके। ऐसे देखा जाए तो नागालैंड में मतलब बहुत ही अच्छा खिलाड़ी निकाल सकते हैं, मगर थोड़ा फैसिलिटीज़ और या स्टेडियम का कमी से मतलब सभी लोग अपना पूरा मन से खेल नहीं पाता है। बहुत लोग गरीब का घर से आता है, तो जैसे आर्चरी होता है तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव गेम है, तो इक्विपमेंट भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो
लोग सोचने लगता है कि आर्चरी करना चाहता है मगर नहीं कर पाता है, मगर मैं चाहती हूँ कि अगले 10-12 साल के अंदर मतलब आर्चरी नहीं, नागालैंड में आर्चरी के अलावा हर स्पोर्ट्स बहुत ही आगे निकलेगा। तो मुझे सबसे खुशी है कि मेरा जो कोई भी है मतलब सबसे पसंद मेरा इक्विपमेंट, और जो कंपटीशन जाता है तो सबसे स्टैंडर्ड गेम लगता है, तो वही सबसे बहुत ही पसंद है। जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरा साथ है, तो उन लोगों को कहना चाहता है कि सभी लोग को अपने बच्चों को मतलब इतना अच्छा से सपोर्ट करें और मेरी तरह मेरे से भी अच्छा खिलाड़ी बन सके और अपने देश के लिए अपने देश का नाम रोशन करे और अपना स्टेट का नाम रोशन करे। यही सभी लोगों को कहना चाहता हूँ। जय हिंद। Starting from her elder sister, passed on to her and her younger brother, who is an upcoming promising archer qualifying for the next Olympic. This humble family of archers is all set to create a new trend in the field of sports for athletes, proving that whatever the barriers in life, with strong commitment and goodwill, one can prosper with excellence. Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register Oh, lovely. Well done. अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111
आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। Good evening and welcome to Doordarshan Kendra, Kohima. I am Kevino Naprautzu with the news. First, the headlines. Chief Minister Neiphiu Rio holds meeting on monsoon preparedness. Deputy Commissioner Dimapur Tinojong Shichang reaffirms government's unwavering commitment to enforcing ILP in designated districts. Foreign Secretary Vikram Misri briefed members of all party delegations being sent abroad for diplomatic outreach on Operation Sindoor. And Union Finance Minister Nirmala Sitharaman calls for right balance between regulation and freedom to deepen competition. Now the news in detail. A monsoon preparedness meeting was held under the chairmanship of Nagaland Chief Minister and Chairman NSDMA Dr. Neiphiu Rio at Chief Minister Conference Hall, Nagaland Civil Secretariat, Kohima. Commenting on preparedness of essential commodities, Rio asked the department to make an assessment of essential commodities across the districts before the monsoon season sets in. He further pointed out that if there are any complaints from any village or towns on shortage of essential commodities, the matter has to be reported. He also instructed the department to monitor the fair price shop and see that consumers' rights are protected. Rio also raised concern on traffic advisory and directed the PWD department to check on how many tons can be carried by trucks in national highway, adding that tons has to be specified and monitored during the monsoon season. He also advised the administration and police department to send teams of officers and dubashis for routine road checks so that there is smooth flow of traffic in towns and also in national highways during the monsoon season. Rio also shared his views and concerns on restoring the State Quality Control Board in Nagaland at the earliest. Minister for Roads and Bridges G. Kaito Aye, also sharing his views on road sector, said that people want good road and that the NHIDCL should start taking serious responsibility and provide resilient road for the people of Nagaland. A crucial meeting was convened today at the office of the Deputy Commissioner Dimapur, bringing together leaders of various minority communities to discuss the forthcoming implementation of the Inner Line Permit ILP in the district. Deputy Commissioner of Dimapur Tinojong Shichang addressed the media following the meeting and reaffirmed the Nagaland state government's unwavering commitment to enforcing ILP in the designated districts. He highlighted that the government had issued a clear directive on May 14, mandating the implementation of ILP without exception. The DC said the purpose of the meeting was to inform and clarify the government's position to community and organizational leaders. He acknowledged that past delays in ILP enforcement had created uncertainty among some groups, prompting the need to convene the meeting and address any lingering doubts. The Deputy Commissioner urged all communities to begin preparing the required documentation, particularly for individuals seeking exemption under Category 3 in advance of the formal notification. The meeting was attended by representatives from a number of community organizations. So we wanted to clear it, the doubt to them that this time though, he will be implement group less na. So they can exemption category kangi, they can key documents as a need to arrange kuri so that category 3 kando aman notification dibo tigana itu ILP implementation to start kuro na itu information dibole karne aji meeting loise. Aman itu notification dibo. Aro koa nishina smart card BRC kan dibole ase to itia BRC non naga indigenous kan olop appearance ti rakhina ase so that taigan la problem bi itu khan na paile to taigan like those exemption category kan do taigan bi itu apply group le na pare.
Foreign Secretary Vikram Misri today briefed members of all party delegations being sent abroad as part of India's diplomatic outreach on Operation Sindoor. Earlier, the government had announced to send 7 multi-party delegations to various countries to present India's firm stand against Pakistan-sponsored terrorism. The 7 all-party delegation comprising 59 members of parliament are scheduled to visit key partner countries, including members of the UN Security Council, from tomorrow to 5th of the next month. During the 10-day visit, Indian delegations will project the country's national consensus and resolute approach to combating terrorism in all its forms and manifestations. They will carry India's strong message of zero tolerance against terrorism to the international community. मंडल बनाया है, उसका एक सदस्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले 3 दलों को आज ब्रीफिंग दी जा रही है। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी जा रही है। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that a right balance is needed between market regulation and freedom, especially as India increasingly relies on domestic growth levers amid rising geopolitical and environmental challenges. While addressing the 16th annual day of the Commission of India (CCI) in New Delhi, the Finance Minister noted that in recent years, the world has witnessed a series of wide-ranging disruptions, making the need for strong, responsive and forward-looking institutions. She emphasized that India's ongoing structural reforms, such as asset monetization, disinvestment and digital public infrastructure, are all geared towards unlocking market potential and deepening competition. Highlighting the role of the CCI, the minister said the Commission has played a key role in keeping competition alive in the market and ensuring a dynamic Indian economy. She added that CCI's ability to strike a balance between regulatory vigilance and pro-growth mindset will be crucial in building a resilient, equitable and innovation-driven economic framework as India aspires to become a Viksit Bharat by 2047. Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Prahlad Joshi, today launched the Dipo Darpan, Anamitra and Anasahayata apps in New Delhi. The apps are aligned with the government's aim of advancing the country's food security through digital innovation. Speaking on the occasion, Joshi said the apps, as a tool of e-governance, will help in modernizing the agricultural infrastructure and public distribution system of the country. He also said that they will foster increased efficiency, service quality, infrastructure and operational efficiency. Joshi added that the apps will also facilitate transparency and accountability through the latest technology. He also reiterated the government's commitment to provide every benefit to the individual standing at the end of the line. Let us now take a short break. 605. बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Nagaland State Commission for Protection of Child Rights (NSCPCR), led by Chairman Alun Hang Singh, held a meeting with the Director and senior officials of the Department of Information and Public Relations at the Directorate of IPR today. The meeting deliberated on strengthening child protection mechanisms, especially concerning the role of the media.
Chairman Alun Hang Singh emphasized the responsibility of the media in ensuring the rights, dignity and safety of children, particularly in the way they are represented and discussed in public domains. He highlighted that violations, whether intentional or due to lack of awareness, can have long-lasting psychological and social impacts on children. Meanwhile, Director IPR Zivinho Thenyo acknowledged the insights shared by the Commission and expressed commitment to work collaboratively to uphold child protection standards across all public communication platforms. District Disaster Management Authority DDMA of Noklak District held a meeting today at DC Conference Hall, Noklak, under the chairmanship of DC and Chairman DDMA Noklak, P. Mono Khyamnungan. The DC highlighted on the roles and responsibilities of different functionaries and stakeholders and requested them to coordinate properly during the time of disaster. The DC also requested all the line departments to be prepared for any eventuality for the coming monsoon. He also requested the departments and various stakeholder departments to document and submit the activities taken and stock available at the earliest. Meanwhile, SDO Civil Noklak Vikoto Richa laid down the preparation of the District Disaster Management Plan, DDMP. He mentioned that DDMP is a crucial document that outlines strategies for disaster preparedness, mitigation, response and recovery at the district level. The Border Security Force has announced that the retreat ceremony will resume at all 3 joint checkposts along the Punjab frontier starting today. According to the BSF, the ceremony will be open exclusively to media persons today and will be resumed for the general public from tomorrow. The retreat ceremonies at Atari, Husainiwala and Satki has been suspended for the public on the 8th of this month. The decision to suspend the retreat ceremony was taken a day after India conducted Operation Sindoor, targeting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The BSF, however, has said that the gates between the two nations will remain shut on the Indian side. There will be no ceremonial handshake between the Indian Guard commander and his counterpart from the Pakistan Rangers after the lowering of flags at sunset, a departure from the usual tradition. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Netherlands Prime Minister Dick Schoof in The Hague today. In a social media post, Dr. Jaishankar shared that during his meeting, he conveyed the warm greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Netherlands PM and thanked him for the Netherlands' firm and resolute stance against terrorism. Appreciating Dick Schoof's commitment to taking the India-Netherlands partnership to newer heights, the minister assured that teams from both nations will work hard to achieve these goals. Last month, the Netherlands Prime Minister Dick Schoof had strongly condemned the cowardly April 22 Pahalgam terror attack and rejected terrorism in all its forms and manifestations. The External Affairs Minister is on a 6-day visit to the Netherlands, Denmark and Germany. Now let us look at the weather reports of the district headquarters of Nagaland. Kohima today recorded a maximum temperature of 22 degrees Celsius and a minimum temperature of 16 degrees Celsius, while Dimapur had a maximum temperature of 29 degrees Celsius and a minimum temperature of 22 degrees Celsius. Wokha experienced a maximum temperature of 27 degrees Celsius and a minimum temperature of 20 degrees Celsius. Mokokchung had a maximum temperature of 26 degrees Celsius and a minimum temperature of 18 degrees Celsius. Mon had a maximum temperature of 29 degrees Celsius and a minimum temperature of 20 degrees Celsius. Towards the east, Twinsang had a maximum temperature of 21 degrees Celsius and a minimum temperature of 15 degrees Celsius. Zinabuto had a maximum temperature of 22 degrees Celsius and a minimum temperature of 16 degrees Celsius. Phak had a maximum temperature of 20 degrees Celsius and a minimum temperature of 15 degrees Celsius. That's all for the weather report. Come to the end of this evening's bulletin. Have a good night.